अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 13 SK22। A 28-year-old female presents with delayed menses. She is 8 days late with her normal menses cycle. The hormone that needs to be tested is secreted from। तो इसमें जो हार्मोन आपके साथ सिक्रीट होता है ये आपके साथ सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होगा। ठीक है, तो पेशेंट को डिलेड मेंसेस है, 8 डे लेट, शी इज़ 8 days लेट विद नॉर्मल साइकिल। तो दिस इज सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। द हार्मोन टेस्टेड टू कंफर्म प्रेगनेंसी, ये कौन सा हार्मोन है? ये HCG की बात कर रहे हैं। ये हार्मोन आपके साथ सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से रिलीज़ होता है, which is the layer of cell that forms the outer covering of the blastocyst and later become the part of placenta. What is the initial step in atherosclerosis? तो एथीरोस्क्लेरोसिस में सबसे इनिशियल स्टेप जो आपको मिलेगा दैट इज़ एंडोथेलियल इंजरी। Atherosclerosis, the underlying disease process that leads to MI, begins with damage or dysfunction of the vascular endothelium and the inner lining of the artery. फिर है a 2-year-old boy presents with undescended testes, crypt or chiasm. During development, which structure primarily guides the testes into scrotum? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये आपके साथ होगा गोबरनेकुलम, ऑप्शन ए। गोबरनेकुलम आपके साथ मीजोडर्मल स्ट्रक्चर है, ये कनेक्ट करता है कॉर्डल पोल ऑफ द टेस्टिस को स्क्रूटल स्वेलिंग के साथ। इट इज़ बिलीव टू गाइड एंड एंकर द टेस्टिस एज द बॉडी ग्रोज, essentially pulling the testes through the inguinal canal and into the scrotum during the final phase of testicular descent. फिर है 30-year patient suffering from neurodegenerative disorder undergoes an EEG that shows wave with a frequency of 4 to 7 cycles per second. What type of EEG wave corresponds to this frequency range? तो इसमें आपका कीवर्ड जो है वो EEG है। EEG जब भी आ जाए उसमें आपको थीटा वेव्स मिलती हैं। Pregnant woman with uterine fibroid is at risk of which type of degeneration during pregnancy? तो प्रेग्नेंट वुमेन है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, उसमें कौन से टाइप की डिजेनरेशन आपको मिलेगी? इसमें आपको रेड डिजेनरेशन मिलती है, ऑप्शन डी। रेड डिजेनरेशन को हम कहते हैं कैर्नियस डिजेनरेशन और नेक्रोबायोसिस। ये मोस्ट कॉमन है, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट टाइप है फिब्रिनॉइड डिजेनरेशन की to occur during pregnancy. A receptor is being studied that respond to different stimuli of light. Which property of the receptor is being tested? तो इसमें हम कौन सी property of receptor test कर रहे हैं? That is the modality. Modality is a term used in sensory physiology. ये आपके साथ describe करता है the type of sensation a receptor responds to. ठीक है, उसमें लाइट, हीट, प्रेशर, पेन, ये चीज़ें आती हैं। और ट्रांसडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें लाइट एनर्जी आपके साथ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है। एडेप्टेशन में इस इज़ द डिक्रीज़ इन रिसेप्टर रिस्पॉन्स, इसमें रिसेप्टर का रिस्पॉन्स डिक्रीज़ होता है ओवर टाइम डिस्पाइट कांस्टेंट स्टिमुलस। और सेलेक्टिविटी में है कि this refers to the receptor's ability to respond most readily to only one type of stimulus. Patient presents with polyuria, polydipsia, deprivation test shows no increase in urine osmolality. After administration of desmopressin, urine osmolarity dramatically increases. तो इसको जो है इसका वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट किया गया, जब इसको उसमें नो इंक्रीज़ इन यूरिन ऑस्मोलैलिटी आपको मिलती है। जब इसको डिस्मोप्रेसिन दिया तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी ड्रास्टिकली आपके साथ इंक्रीज़ हुई। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज?
तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज है सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। डेस्मोप्रेसिन आपके साथ एडीएच एनालॉग है। A dramatic increase means that kidneys are functional. They responded to the hormone, but the body was not producing ADH in the first place. This pattern confirms central diabetes insipidus. In nephrogenic diabetes insipidus, the kidney receptors are defective, so urine osmolality would not increase significantly after desmopressin. ठीक है, तो ये आपके साथ क्या हुआ? दिस इज़ अ केस ऑफ सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, क्योंकि इसमें आपके साथ क्या हुआ है कि यूरिन ऑस्मोलैरिटी आपके साथ इंक्रीज़ हुई है आफ्टर डेस्मोप्रेसिन। The nuclei responsible for hunger and satiety are located in which part of the brain? तो hunger और satiety के लिए जो आपके साथ न्यूक्लियाई होते हैं वो हाइपोथैलेमस में होंगे। A mechanic is having difficulty with his hand grip. His thumb movement are intact but he is unable to flex his finger at the proximal and distal phalanges. Which nerve is involved? तो इसमें कौन सा नर्व आपके साथ इन्वॉल्व होता है? दैट इज़ योर मीडियन नर्व। जब भी थंब मूवमेंट इंटैक्ट हो और हैंड ग्रिप में मसला हो, तो inability to flex the finger at the proximal and distal phalanges indicate paralysis of flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus. They are mainly supplied by the median nerve. The thumb movement is being intact suggests the lesion may be more distal. Ulnar nerve supply the flexor digitorum profundus for digits 4 and 5. A female presents with menorrhagia and mucosal bleeding. लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन पे इंक्रीज बीटी नज़र आ रहा है, नॉर्मल पीटी एंड एपीटीटी, मार्करी डिक्रीज 1 मिलीब्रोइन फैक्टर लेवल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ प्राइमरीली अफेक्टेड? तो इसमें जो प्राइमरीली अफेक्टेड है दैट इज़ योर प्लेटलेट एडहेजन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ 1 मिलीब्रोइन फैक्टर इज़ इन द प्लेटलेट एडहेजन। प्लेटलेट एडहेजन क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है in forming a platelet plug where platelets stick to the damaged blood vessel wall. 1 millibrand factor mediates the initial sticking. Therefore, low 1 millibrand factor directly impairs adhesion, leading to prolonged bleeding time. Platelet aggregation क्या है? ये second step है। Platelet sticks to the other platelets to build up the plug. This primarily mediated by fibrinogen binding to the platelet glycoprotein 2B and 3A receptor, not the 1 millibrand factor. फिर है pregnant patient is treated case of hyperthyroidism. Now she presents at 6 weeks of gestation with following labs. TSH normal है, T4 ज़्यादा है. What is the management? hyperthyroidism है, इसमें सबसे पहले आपने देना है PTU. एंटी थायराइड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पीटीयू है, सेकंड थर्ड में मीथामिजोल है। फॉर थायराइड स्टॉर्म पीटीयू देते हैं क्रॉसिस प्लेसेंटा एंड अफेक्ट द फीटस, उसमें मीथामिजोल इज़ ग्रेटर देन पीटीयू। फिर है 4-year-old boy presents with distended abdomen. Doctor also noticed some hair changes. What is the diagnosis? तब जब भी आपको distended abdomen आ जाए तो इसमें आपने केवेश्योर कर लिखना है। Known TB patient is taking anti-TB drugs. Which vitamin should be added to prevent one of the most common complication? तो anti-TB drugs ले रहा है, इसमें आपने कौन सा ऐड करना है कि फर्दर कम्प्लिकेशन ना हो? दैट इज़ योर विटामिन B2 जो आपके साथ राइबोफ्लेविन विटामिन B6 जो आपके साथ आइसोनियाजिड है, इंटरफेयर्स विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ पायरिडॉक्सिन। B6 पायरिडॉक्सिन है और इसके साथ आइसोनियाजिड इंटरफेयर करता है, लीडिंग टू फंक्शनल डिफिशियंसी। दिस डिफिशियंसी ऑफन कॉजेस पेरिफेरल न्यूरोपैथी, numbness, tingling, pain in the hands and feet. Supplementation with vitamin B6 is standard practice for all patients taking isoniazid to prevent this dose dependent neurotoxicity. फिर है anatomical site for the insertion of chest tube for thoracocentesis.
तो चेस्ट ट्यूब हम कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? मिड एक्सिलरी लाइन में इंसर्ट करते हैं. सेफ जोन फॉर चेस्ट इंसर्शन is the safe triangle where posterior border is the anterior margin of the latissimus dorsi muscle near the mid-axillary line and the fourth or fifth intercostal space. The mid-axillary line insertion is preferred to avoid the breast, pectoralis major muscle and injury to the heart. Perhaps patient has history of gunshot injury. Now he presented with complaint of swelling that appears above the clavicle while coughing or sneezing. Swelling more likely is, तो इसका जो swelling है ये कौन सा है among the following? This is pleural membrane. Swelling above the clavicle that appears with coughing, sneezing suggests herniation or protrusion of a structure due to increased intrathoracic pressure. This could be a defect in the fascia muscle allowing the cervical dome of the pleura or viscus like the lung apex to protrude. तो इसकी वजह से ये प्रोट्रूड होता है. पेशेंट with a patient with presents with weight loss and bilateral hilar lymphadenopathy. He is HIV negative with no TB contact or travel history. तो इसका डायग्नोसिस क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ सार्कोइडोसिस. जब भी आपको बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी की बात आ जाए तो उसमें आपने फर्स्ट थिंग जो चूज़ करना है दैट इज़ योर सार्कोइडोसिस. The combination of bilateral lymphadenopathy, weight loss in a patient HIV negative है, TB contact नहीं हुआ तो that is sarcoidosis. TB is the major cause of lymphadenopathy and weight loss. It typically presents with unilateral, यहाँ पे unilateral होगी. Bilateral आपको जो है sarcoidosis में मिलती है और unilateral TB में और mediastinal lymphadenopathy is specifically excluded by the history. Which immunoglobulin crosses the placenta? तो जो आपके साथ placenta cross करता है that is your IgG. 35-year-old woman presents with recurrent episodes of headache, palpitation and sweating. For the past 3 months during these episodes she feels anxious and flushed. Her blood pressure during an episode is 210 by 110. On physical examination she appears anxious and diaphoretic. Her pulse is 120 per minute during an attack. तो यूरिन एनालिसिस आपके साथ नॉर्मल है. दिस इज़ अ केस ऑफ ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ pheochromocytoma. 30-year-old man falls directly on his right shoulder. After the injury he is unable to abduct his arm beyond 15, though he can flex and extend the elbow. On examination there is flattening of the shoulder contour and loss of sensation over the lateral aspect of the upper arm. तो इसमें कौन सा नर्व आपके साथ इन्वॉल्व होगा? ये आपके साथ रिपीटेड है और इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर एक्सिलरी नर्व. अ वुमन कम्स with her husband and newborn complaining of him not being well. Pregnancy was spent at home where she lives with her partner and 3 cats. Imaging of the newborn reveals intracranial calcification. यहाँ पे आपका सिनेरियो डायग्नोज हो जाता है. इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन आपको कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में मिलती है, ऑप्शन ए. तो इसमें आपको कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में कोरियोरेटिनाइटिस, हाइड्रोसेफेलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन मिलेगी. मदर एक्सपोजर टू कैट्स है, टॉक्सोप्लाज्मोडा गोनेडाई oocytes in their feces is classical epidemiological link for this congenital infection. Perhaps 52-year-old teacher presents with generalized body weakness and fatigue. He gives a history of receiving 2 units of blood transfusion a few months ago. On laboratory investigation, liver function tests are found to be deranged to 3 times the normal value. What is the likely cause of his condition? तो इसका likely cause आपके साथ क्या है? This is a case of hepatitis B virus. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि this is hepatitis B is a blood-borne virus and is common cause of post-transfusion hepatitis leading to significant elevation of the liver enzyme. CMV may be transmitted by transfusion.
but usually cause hepatitis in immunocompromised patient, making HBV the most likely cause in this scenario. Per has 6-month-old infant presents with hypoglycemia, hepatomegaly, and lactic acidosis. Hypoglycemia है, लिवर इनलार्ज है, लैक्टिक एसिडोसिस है, आपको एलिवेटेड यूरिक एसिड और ट्राइग्लाइसराइड्स नज़र आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा? तो ये सारे ऑप्शंस हैं। दिस इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, वॉनगिरकी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, पॉम्पी में आपको लाइसोसोमल अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोसाइडेज की डिफिशियंसी मिलेगी, जिसे हम एसिड माल्टेज भी कहते हैं, विद अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। टाइप 3 में आपको डिब्रांचिंग एंजाइम डिफिशियंसी मिलती है, अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइडेज प्लस 4 अल्फ़ा डी ग्लूको ट्रांसफर ग्लूकेनो ट्रांसफरेज। टाइप 4 में उसे हम एंडरसन डिजीज़ कहते हैं, ब्रांचिंग एंजाइम अल्फ़ा 1,4 ग्लूकैन या ग्लाइकोजन ट्रांसफरेज की डिफिशियंसी आपको मिलेगी। टाइप 5 में स्केलेटल मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, और टाइप 6 में हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। A marathon runner has been running continuously for several hours. His muscle and liver glycogen stores are completely depleted. Which of the following metabolic process will now primarily provide energy for continued muscle activity? तो continued muscle activity के लिए energy जो required होती है, that will come from gluconeogenesis. A female patient presents with ophthalmoplegia resulting in horizontal gaze, diplopia, and a difficulty diffusely enlarged non-tendal goiter. लेबॉर्ट्री टेस्ट पे आपको नॉर्मल थायराइड हार्मोन प्रोफाइल लग रहा है, तो व्हाट इज़ द कॉमन डायग्नोज? ये केस है ग्रेव्स डिजीज़ का। अ पेशेंट is a resident of Swat region, presents with difficulty in enlarged non-tender goiter. The thyroid hormone T3, T4 are within normal limit. What is the most likely diagnosis in this geographical content? तो इस geographical content में आपके साथ most likely cause is your endemic goiter, क्योंकि hilly areas में आपको usually iodine की deficiency मिलती है, तो that is endemic goiter. A diffuse non-tender goiter in geographically defined area like Swat with normal thyroid profile to a simple goiter due to environmental factor, also known as endemic goiter. इसको हम कहते हैं endemic goiter. फिर है an 50-year-old an old male of 80 years presents to the hospital with fever, confusion, neck stiffness, vomiting, Kearney's Brzezinski sign, positive lumbar puncture, confirm diagnosis of acute bacterial meningitis. तो बैक्टीरियल meningitis का causative agent क्या है? That is your Listeria monocytogenes. एल्डरली पेशेंट जिनकी एज 55 से ज़्यादा हो, उसमें हम लिस्टीरिया को कंसिडर करते हैं, और लिस्टीरिया के कवर करने के लिए हम एम्पेरिकल कवर देते हैं विद एम्पिसिलिन। तो कवर के लिए हम देंगे कवर, इट इज़ कवर्ड विद एम्पिसिलिन। 62-year-old diabetic patient experiences sudden right-sided weakness and speech difficulty lasting 20 minutes and fully resolving. तो इसका डायग्नोज क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ हेमोरेजिक, दिस इज़ अ केस ऑफ ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, जिसे हम कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है आपके साथ। अच्छा, a 75-year-old man presents with urinary hesitancy, weak stream, and nocturia and weight loss. Digital rectal examination reveals hard nodular prostate. तो ये किस चीज़ का केस है? दिस इज़ अ केस ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा एल्डरली में होता है, पेरिफेरल जोन पे होगा, PSA में भी एलिवेटेड, में मेटास्टेसाइज टू द बोन। प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट्स विद सडन पैसेज ऑफ वेजिकुलर टिश्यू, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली मार्कर? ग्रेप्स लाइक टिश्यू आपको किस में मिलते हैं? ये आपको HCG मोलर प्रेगनेंसी में मिलेंगे।
Biopsy shows granuloma with central caseous necrosis after chronic infection. तो chronic infection के बाद ग्रेनुलोमा विद केशियस नेक्रोसिस जो मिलेगी ये आपको टीबी में मिलती है, ऑप्शन सी। पेशेंट कंज्यूम मोस्टली ब्रेड एंड प्रोसेस्ड फूड, नो वेजिटेबल्स, शो मैक्रोसाइटोसिस। तो इसकी लाइकली डिफिशेंसी क्या है? दैट इज़ फॉलिक एसिड डिफिशेंसी। फॉलिक एसिड आपके साथ इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट से, और इसकी डिफिशेंसी आपके साथ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करवाएगी। Neuropathy less command than B12. A patient presents with spinal cord injury and is unable to void urinary retention या incontinence है, which spinal segment are most likely involved? तो इसमें जो spinal segment involved है that are S2, S3, S4. Option A, 68-year-old smoker with bronchogenic carcinoma developed wasting and wrinkling of the right half of the tongue. एग्जामिनेशन पे आपको सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी नज़र आ रही है। विच क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई इज़ अफेक्टेड? तो इसमें जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई अफेक्टेड है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर सी में हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस आता है। तो दिस इज़ अ केस ऑफ हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। यूनिलैटरल टंग वेस्टिंग लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, क्रेनियल नंबर 12। हाइपोग्लॉसल इन्वॉल्व होता है, टंग डेविएट्स टू द राइट लीजन। अ पेशेंट विद हाइपोथैलेमिक डोपामिन डिफिशिएंसी डेवलप गैलेक्टूरिया। तो इसमें फाइंडिंग क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ इंक्रीज्ड प्रोटीन्स, इंक्रीज प्रोलैक्टिन। फिर है इम्प्रॉपर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन द बटक मोस्ट ऑफनली इंजर्स। तो ये किस चीज़ को इंजर करती है? शियाटिक नर्व को। अच्छा, फिर है पेशेंट हैज़ एलिवेटेड लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लिपिड वैक्यूल्स इन द मसल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये आपको मिलती है ड्यू टू कार्निथिन डिफिशिएंसी। कार्निथिन मॉलिक्यूल है दैट प्लेज अ रोल इन दिस प्रोसेस। ये एक्ट करता है एज अ शटल transporting long chain fatty acid across the inner mitochondrial membrane into the mitochondrial matrix. Without adequate carnitine, these long chain fatty acid cannot enter the mitochondria. They accumulate in the cell cytoplasm, formation of lipid vacuoles and increased fatty acids and triglyceride in the muscle tissue. फिर है 32-year-old मैन प्रेजेंट्स विद फैटीग, इजी ब्रूजिंग, रिकरेंट इन्फेक्शन। सीबीसी पे पैनसाइटोपिनिया नज़र आ रही है। पेरिफेरल स्मीयर आपके साथ रिवील करता है लार्ज माइलोब्लास्ट, एबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड नीडल शेप एजीरोफिलिक इंक्लूजन। तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ AML, दैट इज़ अ केस ऑफ AML। तो AML स्टैंड्स फॉर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन अगर आपने पढ़नी है, यू कैन पॉज द वीडियो हेयर, रीड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 9-year-old बॉय प्रेजेंट्स विद पेलर जॉन्डिस एंड स्प्लीनोमेगैली। पेरिफेरल स्मीयर पे आपको स्पीरोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट फॉर सिमिलर सिम्टम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डिफेक्ट इज़ मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंडीशन? तो इसमें आपको स्पेक्ट्रिन की डिफिशेंसी मिलेगी, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्यूमर मार्कर ऑफ मेडुलरी कार्सिनोमा? तो मेडुलरी कार्सिनोमा के लिए हम कैल्सिटोनिन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कैल्सिटोनिन। रेफर्ड पेन फ्रॉम द हार्ट is carried mainly by which structure? It is carried by the phrenic nerve. A patient suffers stab wound to the right side of the spinal cord. At T10 level on examination, he has loss of proprioception and motor function on the right side below the lesion, but loss of pain and temperature sensation on the left side. Which spinal cord syndrome best explains these findings? तो इन findings को कौन best explain करेगा? That is your posterior cord syndrome. That is your posterior cord syndrome. Patient presents with difficulty naming objects, anomia, but comprehension is intact. तो लीजन कहाँ पे है? This is a case of angular gyrus जो anomic aphasia करवाती है। नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में
आपके साथ एनोमिक एफीजिया होगी, ब्रोका प्लस मोटर एफीजिया, नॉन फ्लुएंट एरिया 44-45, इंफीरियर फ्रंटल गैरिस में आपको ब्रोका मिलता है। वर्निकी सेंसरी एफीजिया, फ्लुएंट एरिया 22, सुपीरियर टेम्पोरल गैरस उसमें होगा। ग्लोबल एफीजिया में बोथ वर्निकी एंड ब्रोकाज एफीजिया प्लस arcuate fasciculus, एनोमिक एफीजिया में माइड फ्लुएंट एफीजिया, फेलियर ऑफ वर्ड रिट्रीवल और एंगुलर गायरस विल बी इन्वॉल्व्ड। फिर है 35 ईयर ओल्ड फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, प्रेजेंट्स विद ग्रीनिश डिस्चार्ज फ्रॉम हर निपल एंड निपल रिट्रैक्शन ऑन एग्जामिनेशन। द कॉमन बिनाइन कंडीशन इज, तो ग्रीनिश डिस्चार्ज आपके साथ जब भी आई ये हमें डक्टल एक्टीजिया में मिलता है। Difficulty initiating shoulder abduction from 0 to 15 suggests damage to which muscle? तो 0 to 15 supraspinatus का काम है, तो वो डैमेज है। From which of the following embryological structure does the thyroid gland primarily develop? तो thyroid gland कहाँ से developed होता है? ये endoderm of the primitive pharynx से develop होगा। Thyroid gland originates as outpouching of endoderm of the floor of the primary pharynx, primitive pharynx, specifically near the foramen cecum at the base of developing tongue, and then descend to its final position in the cheek. फिर है woman presents with vaginal bleeding 2 weeks after delivery, the most likely cause of secondary PPH क्या है most likely cause इसका? that is retained placental tissue. सेकेंडरी पीपीएच 24 आवर्स में होता है, 6 वीक पोस्टपार्टम में रिटेन प्रोडक्ट प्रिवेंट नॉर्मल इनोवुलेशन ऑफ द यूट्रस। फिर है अ वुमन अंडरवेंट सेल्फ इंजेक्टमी फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रिस्क ऑफ रिकरेंस एंड सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी? तो सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी में कितना रिस्क होगा ऑफ रीअकरेंस? ये आपके साथ आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में 1:20, 1:20 आपने याद रखना है। न्यूबॉर्न इज एडमिटेड विद सेवेयर jaundice, pallor and hepatosplenomegaly. The obstetric records show that the molecule is Rh negative and previously delivered an Rh positive baby without receiving anti-D prophylaxis. Current infant को erythroblastosis fetalis हुआ है due to hemolysis caused by maternal antibodies while crossing the placenta. तो ये कौन से टाइप की hypersensitivity reaction है? This is type 2 hypersensitivity reaction. In married couples, what is the most common cause of increased induced abortion? तो increased induced abortion कब होती है? When there is unwanted pregnancy. What is the most common site of ectopic pregnancy? तो ectopic pregnancy का most common site जो है वो आपके साथ ampulla of fallopian tube आता है। 28-year-old woman presents with lower abdominal pain, foul vaginal discharge and cervical tenderness. तो इसका most likely cause क्या है? This is a case of pelvic inflammatory disease. Lower abdominal pain, cervical motion tenderness, purulent discharge are classical features of PID, usually due to ascending infection. फिर है young underweight woman presents with secondary amenorrhea. तो मोस्ट लाइकली कॉज इसका क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज। लो बॉडी फैट, डिक्रीज जीएनआरएच, पल्सिटिलिटी होगी जो आपके साथ सेकेंडरी एमेनोरिया कॉज करवाती है। 25-year-old woman presents with oligomenorrhea, infertility, obesity, hirsutism. सेम क्वेश्चन, PCOS है। Women develop primarily postpartum hemorrhage immediately after delivery. What is the first step in management? The first step in management is your uterine massage, rub uterus. Women develop postpartum pituitary necrosis, Sheehan syndrome उसको develop हुआ, तो इसका consequence क्या होगा? That is loss of menses, which is amenorrhea. तो loss of मेंसेस जो एमेनोरिया है ये कॉमन कॉन्सिक्वेंस है। शीहान सिंड्रोम आपके साथ ये कॉज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी इन्फार्क्शन, डिफिशिएंसी ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, एमेनोरिया एंड अदर एंडोक्राइन फंक्शन,
Per head, 29-year-old woman develops optic neuritis, weakness in her lower limbs. MRI revealed demyelinating lesion in the brain and spinal cord. Which of the following cell types is most directly affected in this condition? तो इस कंडीशन में कौन से सेल्स अफेक्टेड होंगे? दैट आर योर oligodendrocytes. Option B. A neutropenic patient with Hodgkin lymphoma on chemotherapy developed fever. He is given फिलगैस्ट्रिन. तो फिलगैस्ट्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये स्टिमुलेट करता है न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन को, ये स्टिमुलेट करेगा. फिलगैस्ट्रिन जो है स्टिमुलेट बोन मैरो न्यूट्रोफिल प्रोडक्शन, यूज्ड इन कीमोथेरेपी, इंड्यूस्ड न्यूरोपीनिया टू reduce infection risk. G3P2 38 weeks pregnant woman in the active labor is 8 cm dilated when a lady doctor performs arm. Immediately after arm, the patient develops sudden heavy vaginal bleeding. Fetal heart rate begins to show. Declaration. What is the next best step in management? The next best step in management is your cesarean section. ओके, सी सेक्शन है. फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद फैटीग, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, लॉस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, लो TSH, ACTH, LH, FSH और GH आपके साथ वो भी लो है. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो मोस्ट लाइकली डायग्नोज इज़ अ पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म. पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म आपके साथ जो है ये मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस है. पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में डिफिशिएंसी ऑफ ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स आपको मिलती है. इट इंक्लूड्स पिट्यूटरी ट्यूमर, शीहान सिंड्रोम, इन्फार्क्शन, ट्रॉमा. क्लिनिकल फीचर में फैटीग, हाइपोटेंशन, एमिनूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म आते हैं. 13 week pregnant woman presents for routine dating ultrasound. Her LMP is unknown. Ultrasound shows crown length 150. BPD is 30 mm. Which parameter is most accurate for gestational age estimation? So that is crown rump length. 26-year-old while mild pelvic pain and positive pregnancy test is hemodynamically stable. Transvaginal scan shows no intrauterine gestation. Beta HCG is 1350 micro international units per ml. What is the next best step in management? The next best step in management is your repeat beta HCG in 48 hours. Okay, फिर है ये अगर आपने रीड करना है you can pause the video here. A patient has end diastolic volume of 150 and end systolic volume of 75. तो इसका ejection fraction क्या होगा? That is 50%. Stroke volume EDV minus ESV 150 minus 75. Stroke volume is divided by EDV multiplied by 100. 72-year-old woman tracks her menses cycle. Ovulation typically occur after the mid-cycle. LH surge. How long after the LH surge does ovulation usually occur? तो इसमें आपके साथ 24 to 36 hours is the correct answer. 24 to 36 hours is the correct answer. 28-year-old woman G1 para 0 presents with 6 weeks of amenorrhea, positive urine pregnancy test and right iliac fossa, tenderness for the past several hours. She denies any vaginal bleeding. On examination she is hemodynamically stable but has localized right iliac fossa tenderness, normal leukocyte count but no history of fever. तो इसका most likely diagnosis क्या है? This is a case of ectopic pregnancy. A patient receives gamma radiation for solid tumor. तो gamma radiation for solid tumor receive कर रहा है. ये directly आपके साथ क्या करता है? It helps in the formation of free radicals. Gamma radiation interact with water in cell. Free radical बनाता है, DNA डैमेज करता है, ट्यूमर सेल की डेथ करवाता है. Indirect effect जो है cytotoxicity करवाएगा. Which of the following is the most powerful transporter
in the gut mucosa which causes absorbed stuff back in the gut lumen. तो जो बैक ल्यूमेन में जाता है दैट इज़ पी ग्लाइकोप्रोटीन. लेडी डिलीवर्ड पी लिखना है, HGC ये चीज़ें नहीं लिखनी, पी ग्लाइकोप्रोटीन लिखना है. Lady delivered baby of 4.5 kg went into shock, something coming out of her vagina. इसका मैनेजमेंट क्या है कि मेडिकल शॉक एंड परफॉर्म मैनुअल रिप्लेसमेंट करना है. ये यूट्राइन inversion का केस है in which you should attempt manual replacement as soon as possible. If unsuccessful, then attempt hydrostatic pressure by 2.3 liter of warm saline while tubing into the vagina using upper hand to create a seal around the vulva. Which of the following anticoagulant drug acts as a direct thrombin inhibitor? तो direct thrombin inhibitor आपके साथ dabigatran है. Patient presents with deviation of tongue to the right side on protrusion with intact sensation. Which nerve is injured? तो इसमें जो nerve injure होता है ये आपके साथ वेग right hypoglossal nerve होगा. 40-year-old woman presents with fatigue, weight gain, cold intolerance, constipation, dry skin. Examination पे bradycardia, periorbital puffiness है. TSH is 12, free T4 is 0.5 and free T3 is low. Which of the following is the most likely diagnosed? So this is a case of hypothyroidism. A high TSH, low free T4 points directly to primary hypothyroidism where the problem lies within the thyroid gland itself. First T3 can remain in the low normal range in the early stages of hypothyroidism. अच्छा फिर है patient came to you after 24 hours of unprotected sex. Which of the following is the best emergency contraceptive? तो best emergency contraceptive आपके साथ copper IUCD है. Patient develop elevation of one hemidiaphragm on chest X-ray after neck surgery. Injury to which structure is responsible? तो इसमें injury to the phrenic nerve is responsible. 55-year-old patient presents with difficulty recognizing objects placed in his right hand with eyes closed. On examination, motor power and primary sensation, pain, temperature, touch are intact. Which area of the brain is most likely affected? तो इसमें जो area of brain affected है that is your somatosensory association area. Stereognosis require integration of sensory information which occur in the somatosensory association cortex. फिर है mother has breast cancer, her daughter wants to know her predisposition. कौन सा टेस्ट करना है इसने आपके साथ? he have to do BRCA1 BRCA2 mutation. Patient with presents with painless testicular mass, positive alpha fetoprotein. What is the most likely tumor? So the most likely tumor is going to be yolk sac tumor. What is the cause of visual acuity decrease in presbyopia? तो visual acuity क्यों decrease होती है presbyopia में? Because of which of the following? Increase refractory power, या आपके साथ है increase curvature of lens, elongation of eyeball, decrease accommodation due to loss of lens elasticity. A child presents with headache, visual disturbance, hormonal deficiency. Imaging पे आपको craniopharyngioma नज़र आ रही है. Histopathology पे epithelioid cells है with characteristic cytoplasmic appearance. Which of the following cellular feature is most consistent with craniopharyngioma? Craniopharyngioma के साथ जो consistent आपको मिलता है that is large cell with granular cytoplasm. Which structure contributes most to the semen volume? तो जो semen volume के में सबसे most contribute करता है that is seminal vesicle and prostate. Seminal vesicle 60%, prostate 30%, और others जो है testes और produce sperm में 5%. फिर है Gartner duct is remnant of which embryological structure? तो Gartner duct जो है mesonephric duct का एक remnant है. Wolffian और mesonephric duct, मेल में ductus deferens, epididymis
सेमिनल वेसिकल, फीमेल में एपोफोरॉन, गार्टनर्स डक्ट, मेल पैराडिडमस, फीमेल एपोफोरॉन वगैरह, ये चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। मुलेरियन और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट में मेल अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस, फीमेल यूट्रस, सर्विक्स, ट्यूब्स, अपर वेजाइना। मुलेरियन ट्यूबरकल मेल्स में अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस और फीमेल में क्लाइटोरिस आता है, क्लाइटोरिस होगा ना। यूरोजेनिटल साइनस में मेल्स में यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आए। फीमेल में आपके साथ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रल, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बार्टोलिन ग्लैंड्स, लोअर वेजाइना। यूरोजेनिटल फोल्ड मेल में पीनस यूरेथ्रा बनाएगा, फीमेल में लेबिया माइनोरा। जेनिटल में मेल में स्क्रूटम बनता है, फीमेल में लेबिया मेजोरा। A woman presents with dysmenorrhea, cyclic pelvic pain, and blue red nodule involving the ovarian and pelvic ligament. Symptom worsen during the menses. What is the most likely diagnosis? तो इसका most likely diagnosis is your endometriosis. फिर है female father recently died in tragic road RTA. After some time she developed mood swings and disturbed menstrual period. Which of the following neurotransmitter might affect both mood and menses cycle? तो उसमें आपके साथ डोपामीन आएगा. Dopamine inhibit prolactin secretion from the pituitary gland. Stress related changes in the dopamine can lead to the mood disturbance and hyperprolactinemia, which can cause menstrual irregularities. A pregnant female was treated for TB, anti-TB therapy. After delivery, newborn was found to have deafness. Which drug is used to treat most likely cause of this adverse? तो treatment of आपके साथ डेफनेस क्या होनी चाहिए? दैट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन. ये आपके साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड है, ऑटोटॉक्सिक है, क्रॉस करता है प्लेसेंटा, कंजेनिटल डेफनेस करवाता है इन द फीटस, which is why it is contraindicated in pregnancy. HRZD drugs are generally safe. Female patient was diagnosed with carcinoma cervix, underwent radial hysterectomy. Then which lymph node are primarily removed during this procedure? तो इसमें जो lymph nodes remove होते हैं, that is your internal iliac lymph nodes. तो ये अगर आपने पढ़ना है, you can read this, you can pause the video here and read this. Activation of membrane bound G protein coupled receptor क्या है? तो G protein coupled receptor में there is binding to intracellular receptors and altering gene transcription. Okay, so this is a diagram. इसके बाद है PPI reduce gastric acid secretion by inhibiting which primary active transport? तो ये आपके साथ primary active transport में hydrogen potassium ATPs is the best option. Okay, PPE irreversibly inhibit potassium ATPase in gastric parietal cell, reducing gastric acid secretion. Okay, hypertensive female had difficulty performing precise skill hand movement. The damage to which part of the brain is most likely cause this deficit? तो ये आपके साथ है primary motor cortex. Patient has collagen type 2 deficiency. Which structure is primarily affected? तो इसमें cartilage affected होगा. टाइप 1 में आपके साथ फाइब्रोकार्टिलेज, बोन, टेंडन, फेशिया, स्किन्स आते हैं. टाइप 2 में इलास्टिक हाइलिन कार्टिलेज, विट्रस बॉडी आएगी. टाइप 3 पे ब्लड वेसल्स, यूट्रस, रेटिकुलिन प्लस स्किन. टाइप 4 में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस लेंस, अर्ली वाउंड हीलिंग प्लस ग्रेनुलेशन टिश्यू में टाइप 3 आएगा. लेट वाउंड हीलिंग, वाउंड स्ट्रेंथ में टाइप 1 कोलेजन आएगा. फिर है पेशेंट डेवलप
malignant hyperthermia during anesthesia, which drug is likely responsible? तो malignant hyperthermia कौन से ड्रग से होता है? That is from succinyl choline. Succinyl choline जो है triggers malignant hyperthermia is genetically susceptible individual to due to abnormal ryanodine receptor activity. Which portion of immunoglobulin molecule is involved in phagocytosis? तो phagocytosis में FC of IgG. FC portion of IgG binds to the FC receptor on phagocytes, promoting opsonization and phagocytosis. During childbirth, a pleural pudendal nerve block is performed for anesthesia. What is the mechanism of action? तो इसका mechanism of action क्या है? That is your block sensory fibers of S2 S4. Young male patient with neck stiffness, high grade fever and widespread rash. So what's the cause? That is caused by Neisseria meningitis. Okay, so I'm making all these efforts for you. In return, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पेज को ओपन करें बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो या डायरेक्टली क्लिकिंग ऑन माय नेम. मैंने सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए हैं. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर लीविंग. A young male presents with neck stiffness, high grade fever and widespread rash. तो इसका केस क्या है? This is because of Neisseria meningitis. A reversible replacement of one differentiated mature cell type by another differentiated cell type, usually in response to chronic irritation, is known as. तो इसको हम क्या कहते हैं? This is a criteria of PTE. इसे हम कहते हैं मेटानेफ्रिन्स, metaplasia. Per have female after RTA has difficulty opening her mouth on examination, mandible deviates on protrusion and jaw protrusion is weak. Which muscle attaches to the NMJ capsule is affected? तो इसमें आपके साथ lateral pterygoid आएगा. Lateral pterygoid produce and stabilize the mandible. Injury causes deviation towards the affected side during the south opening. ओके, फिर इसके बाद है ये कुछ मसल्स हैं, ये आपने याद करके यहाँ पे वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड दिस एंड रट्टा दिस. फिर इसके बाद 55 ईयर ओल्ड मेल presents with sudden shortness of breath and chest pain. Which initial lab test can help exclude pulmonary embolism? तो pulmonary embolism को जो आपके साथ exclude करेगा permanently, that is option number D, जिसमें BNP आएगा. A patient with SLE में type 3 hypersensitivity आपको मिलती है S for 1, L for 2, E for 3. तो 1 2 3 में आपके साथ होता है type 2. अच्छा, ये इन्होंने एक डीग्रेनुलेशन की पिक्चर दी है. फर्स्ट एंड फास्ट टेस्ट, स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट फॉर एलर्जन स्पेसिफिक IgE. नहीं, मैंने आई हैवंट. ओके, सो फर्स्ट एंड फास्ट स्किन टेस्ट और ब्लड टेस्ट फॉर IgE. एनाफाइलैक्सिस में फूड ड्रग्स, बी स्टिंग्स, एलर्जीज, एलर्जिक एस्थमा. टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी आती है, उसमें ये एग्जांपल्स है. यू कैन पॉज द वीडियो हेयर. टाइप 3 सेंसिटिविटी की बात की गई है. इन टाइप 3 इमेजिन एन इम्यून कम्प्लेक्स एज 3 थिंग्स स्ट्रक टुगेदर. एंटीजन बॉडी कम्प्लीमेंट में आप एंटीजन बॉडी कम्प्लीमेंट में the examples are SLE, rheumatoid arthritis, reactive arthritis, polyarthritis nodosa, post-streptococcal glomerulonephritis. This is a case of type 4 hypersensitivity. अगर आपने यहाँ पे पॉज करना है, you can. Contact dermatitis में poison ivy nickel allergy, graft versus host disease आएगा.
PPT for TB infection, push test for contact dermatitis, candida skin test for T cells immune function, 4T's T cells transplant rejection, TB skin test touching, contact dermatitis. Fourth type and the last delayed was K. SLE is mediated by immune complex deposition, which is type 3 hypersensitivity reaction. A female presents with third degree uterine prolapse. Which ligament is primarily responsible for support of uterus? तो support of uterus के लिए we have uterosacral ligament. Okay, this is a case of different type of ligaments. मैं zoom out करता हूँ. You can pause the video here and you can read each of the ligaments in details. Patient presents with cleft palate, repeated infection with Klebsiella, 22q11 deletion with defect in third and fourth pharyngeal pouch. What will happen? So there will be tetany. Digeorge syndrome hai and it causes tetany. 6-month married couple has visited fertility clinic with complaint of subfertility. Couple states that they have been taking regular unprotected intercourse for 2 to 3 times per week but has not conceived yet. What is the approximate percentage of couples who conceive within 1 year of trying? तो 1 year of trying में कितने percent couples conceive करती हैं? That is a percentage of 80%. Within 6 months, 70% chances after 12 months, 80% after 24 months. There is 90%. In community with population of 1 million, there were 1 lakh females in a childbearing age and 1 lakh children were born. Live in the year 2000, a total of 50 women died due to pregnancy and related causes. The maternal mortality rate of this community is, so this is a case of 5 divided by 10,000. ये repeat है. Last MCQ for this lecture is patient underwent hysterectomy. Surgeon should know relation of ureter where it can be damaged during hysterectomy. So it can be damaged when it moves upward and laterally behind the broad ligament. So this was all for today's lecture. Hope you enjoyed it. Please do subscribe to the channel. Thanks for watching and inshallah see you in the next video.